ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महामदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया करोमि तं सर्वभूतनिधनं तमैवास्मि इति विज्ञाय राधे तम् जब राय रामानंद जी ने वात्सल्य रस को सर्वशास्त्र साधना महाप्रभु जी बड़े खुश हुए और बोले यह उत्तम आगे बढ़ा वात्सल्य रस उत्तम और आगे कुछ कहोगे। राय ने कहा कांत भाव प्रेम साथ दशा कांत भाव प्रेम साथ दशा प्रेम में भी साथ दशा है। कांत प्रेम किसको कहते हैं? कांत और कांता
सत्तर राष्ट्र भाव में शांत भाव में निष्ठा है, राष्ट्र भाव में सेवा है, सत्य में असंकोच है और वात्सल रस में ममता अधिक्य के कारण कृष्ण में पाल्य ज्ञान और अपने में पालक ज्ञान। यहां तक तो है इन लोगों में, किंतु इसमें एक और है अधिक, निजांग दिया करे न सेवा, अपने समस्त इंद्रियों से कृष्ण की सेवा। ये और किसी में नहीं है। ये केवल भजन का नाम नहीं है। तो या यदि मान कोई करे भत्सम एक स्तुति होते हरे से मोर मन। अभी देखा विचार करके राष्ट्र प्रेम में शांत तो ब्रज में है नहीं, आच्छादित है। राष्ट्र लोग के परम देवता है, कृष्ण ऊपर है, ये लोग नीचे हैं। इस प्रेम के अधीन नहीं। जहाँ पर बराबर भाव है वहां पर कुछ वशीभूत होते हैं सखाओं के प्रेम, ममता अधिक होने के। वात्सल्य में कृष्ण को बहुत नीचे ले गए, लाल्य, पाल्य और अपने को गुरु क्या, और मधुर रस में आया क्या, कांता भाव में आया, सारे भावों को लेकर के, जितने सब अभी तक बताए गए सभी भावों को लेकर, उसमें सभी भाव है। और अधिकांश रूप में कृष्ण की प्रीति के लिए अपनी आंगिक सेवा भी प्रदान करती हैं, जो दूसरों के लिए संभव कर रही है। इसलिए प्रिया यदि मान कर पड़े भत्सम एक स्तुति होते हरे से ही हरे मोर। यदि क्रियाएं मानकर हमारा भर्सन करती है तो वेद स्तुति ब्रह्मा की उससे भी प्रसन्न नहीं होते, उससे भी अधिक प्रसन्न। परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति एक प्रेमा है। इसी प्रेम से कृष्ण की प्राप्ति होती है संपूर्ण रूप से, और वर्षों में पूर्ण रूप से कृष्ण की प्राप्ति नहीं, केवल इसी प्रेम में। इसीलिए कृष्ण गोपियों ने, कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कहा है न पारे हम निरवस्य संजय महाभजन दुर्जर देह श्रृंखला संभृश्य। हे गोपियों, मैंने प्रतिज्ञा की है, जो जैसा हमारा भजन करता है उसके अनुरूप उसको फल देता हूं। किंतु बेसी माथा बोले खराब जाए मनियों गौरव लगे और ना तो खोल दो और लोगों के लिए न पारे हम निरवध्य सत्य। हमने प्रतिज्ञा की, जो जैसा हमारा भजन करता है उसका उसी के अनुरूप में प्रतिदान देता हूं। किंतु न पारे हम
सबको तो मैं प्रतिदान देता हूँ, किंतु एक गोपियों को इतना मैं भी नहीं छोड़ता। क्यों? यदि मैं कहूं कुछ मांग लो तो तुम लोग यही मांगे कि अपनी सेवा प्रदान कीजिए, अपनी सेवा से मैं और ही बन जाऊंगा। और दूसरी बात एक और है, वो क्या है? गोपियां कहें यदि हे कृष्ण, जैसे हम लोगों ने अपने पति को, लोक धर्म को, वेश धर्म को, आज्ञा पथ को, गुरुजनों के आदर को सब पर ठुकराकर त्याग कर हम जैसे एकांत रूप में आपके शरणागत हुई हैं, तुम भी ऐसा हम लोग के शरणागत। राधा जी ऐसे कहे, चंद्रावली ऐसे कहे, खसरा ऐसे कहे, सभी जितनी गोपियां हैं, कोटि कोटि सभी गोपियां ऐसा कहें, तो कृष्ण किसी को कर सकते हैं? इसलिए ये संभव है, एकनिष्ठ हम लोग हो नहीं सकते, मैं नहीं हो सकता। तुम जैसे एकनिष्ठ हमारे प्रति हो, मैं किसको छोड़ने से, ये मेरे लिए संभव नहीं, किसी को नहीं छोड़, न मैया को, न बाप को, न कहीं भी आधुनिक भक्त भी हो, उनको मैं नहीं छोड़, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है, इसलिए तुम्हारे अनुरूप मैं भजन नहीं करता। तुम अपने साधु गुणों से ही हमें उस ऋण से मुक्त कर सकते, अन्यथा नहीं संभव मेरे लिए। गोपियों ने कहा, ओ आपने स्वीकार कर ली, यही तो ऋण से आप मुक्त हो गए, ऋण से आप मुक्त। कृष्ण कहते इसके द्वारा तो तुमने और भी मुझको पराजित कर दिया और तुम्हारा ऋण में बचा हो गया। ये उनकी महिमा है, यही वज्रमणियों की महिमा है, इनकी अंतिम सीमा है प्रेम, इसलिए साथ साथ ने कहा। और वो श्लोक क्या है? मन मन आसाम आविर्भूत सौरी स्मयमान मुखाम मुझ पीताम सर्व साक्षात मनमत। कृष्ण साक्षात मनमत कब होते हैं? जब गोपियों के समाज में रहे, वो भी सिर नीचा कर, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ लज्जित होकर, और उनके सामने पीताम्बर से गले में आबद्ध करके मानो त्रिनाथ से नीच होकर के उनके सामने आए। उस समय वो मनमत गोपियों के समाज में ही कृष्ण मनमत हो सकते हैं, और किसी के सखाओं के समाज में तो मनमत हो नहीं सकते। इसलिए ये गोपियों की और भी महिमा है। इसके लिए दो श्लोक उन्होंने श्रीमद् भागवत से ग्रहण, उसकी मैं व्याख्या यू कैन ट्रांसलेट। Sri Gurudeva. Yesterday, we heard from the Lotus Nath of Srila Gurudeva how
Raya Ramananda had suggested to Sri Chaitanya Mahaprabhu that Vatsalya Rasa, parental affection, is Sarva Sadhya Sar, the essence of all life, of good life. So, when Mahaprabhu heard this, he was delighted. And Uttam, this is the best suggestion so far. But Agikeya, can you tell me more, something superior? In reply, Rai kahe kanta bhava prema satya sar. Among objectives of life, no, even among various types of praying sarva satya sar. This kanta bhav is the best, highest objective, the essence. So, what is kanta? Kanta bhav. There are two things, kant and kanta. Kant means male, hero, lover, and kanta is the female counterpart, the heroine. So, here, if we examine, we see that in Shanta Bhav, Shanta Rasa, there is Nishta, attentiveness to Krishna, leaving aside all other things. Then, superior, Dasya Bhav, there is this Krishna Nishta, but also Seva, serving tendency. And then, in Sakya Rasa, there are these things plus Asankoch Bhav, no inhibition, no hesitation. The Shraddha, natural mood of service, due to feelings of equality. Then, because of a very great increase in mamata or possessiveness, in Vatsalya Bhav, parent's mood, you have the conception that Krishna is Palya. That means he is to be maintained and nourished by me. And I am Palak. I am his protector, maintainer and nourisher. I can chastise him and rebuke him for his own benefit. But now, this next mood is called Kanta Bhav. In this mood, all these qualities are included, plus one special extra quality. What is that? Mahaprabhu told to Rupa Goswami. Kanta Bhava Nija Anga Diya Karena Sevan. In Kanta Bhav, the devotee feels that I should serve Krishna with all my senses, with all the limbs of my body. So Krishna, in regard to this mood, himself, he said, Priya Niman Kare Kare Vatsan Vedstuti Hari Hari Se Morman. Krishna said that if my beloveds, those who are Kanta Bhav, they criticize me, they rebuke me, they blaspheme me with so many harsh words, at that time my ears are delighted. I am very much attracted by this. And even if great demigods are offering prayers of the Vedas, then I cannot listen to their prayers, I forget about them, because my heart is stolen away by the sweet words of abuse of my beloved. So, in Braja, Shantaras, not active, it's covered over by other moods. In Dasaras, Krishna is considered to be Paradevata, the supreme object of my worship. He is very great, and I am very tiny and insignificant. In Sakya Rasa, there's more mamata, possessiveness. And therefore, Krishna is somewhat controlled. In Shanta and Dasa Bhav, he is not controlled. In Sakya mood, there's feelings of equality or even superiority, so Krishna is controlled. In Vatsalya mood, then Krishna is a small tiny baby, he is very insignificant. And I am his senior, I am his ward. And therefore Krishna is very much controlled by this Vatsalya mood.
But in Madhurya, Kantavav, there is a collection of all the elements of the ecstatic emotions of the other moods. And one thinks that for the sake of Krishna's happiness, I can serve him with all the limbs of my body. This mood is completely impossible in any of the other rasas. So Krishna is attained and controlled fully by this kind of praying only. Therefore Krishna himself admitted to the gopis of Vrindavan, Na parayam niravatya samujam swasaru krityam vigudayu shapiva yam ma bhajan turjaya geha sinkala samarishitadva pakiyatu sarthuna. Means, O gopis, I have made a promise. Yayatamam prapadyante tamstataiva bhajamyaham. If someone serves me and loves me, then I reciprocate with them accordingly. But, O gopis, I cannot reciprocate with you. It's not possible for me. Why? Gurudeva give two reasons. First, if Krishna will say, what do you want? What do you want from me? Then the gopis will reply, oh, you should give us more service. And then if Krishna will give them more service, then you become more indebted to them. So he can never come out from his position of being in debt to the gopis. So he cannot reciprocate with them. And second reason, Krishna said, Yamapajan Durjaya Geha Srinkala. You left your homes, your husbands, your families. You left all Veda Dharma, religious duties. You left Arya paths, the path of all high class of social etiquette. You have had complete disregard for public opinion. But I cannot do all of these things. Your love is ekanishta. You have left everything just for me. So your love is ekanishta, one pointed to me. But I cannot be ekanishta because it is impossible for me to give up any of my devotees. I cannot give up Madhya Yashoda, Nanda Maharaj. I cannot give up any of my friends. What to speak of any of Krishna's associates in the spiritual world? Any devotee in this world who's trying to serve him from here, Krishna cannot neglect him either. So, Krishna said, I can never repay you. Therefore, the glories of the gopis, this is Antim Simha. This means it is the ultimate limit of the glory of devotional service. Only by you, please be satisfied with your own pious nature. So, Srila Raya Ramananda, he has given some evidence. So Srila Gurudeva was explaining one of them. Thasam avirabut story, smaya mana mukambuja, pitam varadarasha sakshat manmata manmata. When Krishna disappeared during Rasa Leela, and gopis were weeping in separation, again when he appeared, how did he appear? Smaya mana mukambuja. He was smiling very slightly. He was somewhat ashamed and embarrassed. So he was looking down. He had a mood, Trinada Pisunit Bhav, feeling very insignificant for what he had done. And Pitambara Darasapi, opening his Pitambara in a humble submissive mood and decorated with a garland of flowers. How did Krishna look? Sakshat Manmata Manmata. He appeared to be that person who can directly, that Cupid who can directly bewilder the mind and churn the heart even of Cupid himself. So when Krishna is in the Sakha Samaj, that means in the assembly of cowherd boys, or in any other assembly, he never looks this beautiful. Sakshat Manmata Manmata. But only when he is in Gopi Samaj, the assembly of the gopis, at that time, their presence, their company, increases his beauty, and he assumes this Sakshat Manmat Manmata Roop. And so Raya Ramananda, he has given this as an example. Other examples have been given also, and now Srila Gurudeva will explain it. ब्रज में जितने
प्रकार की रतियां हैं, दास्य सख्य वात्सल्य, उनको दो भागों में विभाग किया जा सकता है। They can be divided into two. एक संबंधानुगार और एक कामानुगार। दास्य सख्य वात्सल्य ये अपने संबंध से बधे हुए हैं, इनकी एक मर्यादा है, मर्यादा का उल्लंघन करके ये अधिक कुछ नहीं कर सकते। उनकी सेवा वासना वहीं तक समाप्त हो जाती है। इसलिए इनकी सेवा संबंध की अनुगामिनी है। मतलब क्या? यशोदा मैया का वात्सल्य रस है, तो वो पुत्र और माँ दोनों के संबंध में बधी हुई है। वो अपने अंगों से सेवा नहीं कर सकती है, गोपियों जैसी सब सेवाएं नहीं कर सकती। जब यही नहीं कर सकती तो नंद बाबा और श्रीराम आदि सखा लोग या चित्रक पत्रक दास लोग क्या सेवा करेंगे? इसलिए संबंध की मर्यादा से वो बधे हुए हैं। उनकी सेवा वासना अपने अपने रति के मर्यादा के अनुसार ही में सीमित रहती है। किंतु कांता जो रति है ये किसी से बधी हुई नहीं है। कृष्ण से कोई संबंध तो है गोपियों का, एक है संबंध, किंतु वो संबंध की प्रधानता नहीं है, उनकी सेवा वासना की प्रधानता है। ऐसी सेवा जिससे कृष्ण की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो सके, सभी इच्छाओं। दास शब्द वात्सल्य वाले नहीं पूरा कर सकते, और गोपियों में जो उनकी सारी इच्छाओं को ही वो पूर्ण करेंगे। उन्होंने वेद धर्म, गुरु गौरव, आर्य धर्म, अपना सतीत्व, कुल धर्म, ये सब पेड़ की भांति उनके इस कांता भाव में बह जाता है, उसकी परवाह नहीं करते। उनकी सेवा, उनकी सेवा संबंध सब कुछ तदात्म हो जाता है। मतलब क्या? रुक्मिणी में पृथक भाव से काम हो सकता है, किंतु गोपियों का काम और सेवा में तादात्म्य रहता है, अपने लिए नहीं। रुक्मिणी सत्यभामा का काम अपने लिए हो सकता है, और इसीलिए उसके द्वारा वशीभूत कृष्ण नहीं होते। और गोपियों का वह काम भी सेवा वासना के साथ में तदात्म भाव को प्राप्त कर लेता है, एक ही हो जाता है। वो कुछ भी अपने लिए नहीं करते। कृष्ण आत्मेंद्रिय काम और गोपियों का काम क्या है? कृष्ण की इंद्रियों को जैसे तैसे वो प्रीति कर, इसलिए निजांग दिया ये गोपियां कृष्ण की सेवा से। उनका काम और प्रेम, सेवा वृत्ति, ये कोई भी पृथक पृथक कुछ भी नहीं है, एक है सदा। कृष्ण की सेवा के लिए ही सब कुछ करती हैं। अपने प्रेम, अपने काम की कोई गंध ही नहीं उनके प्रेम से। और लोगों का कुछ हो सकता है। यशोदा मैया का
नंद बाबा के प्रति प्रीति है, गोपियों को किसके प्रति प्रीति है? किसी के प्रति प्रीति नहीं है, बस कृष्ण के प्रति एकांत। ये गोपियों की प्रेम सेवा का, जिससे कि कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं संपूर्ण रूप से। और इनका भर्सन भी तारण तो नहीं करती हैं, पुष्पों से कभी तारण कर सकती हैं, किंतु वेद स्तुति ब्रह्मा से भी अधिक उत्तम होना है। But he had some calm passion. In Samvad, because someone the relation is married, Gopis has nothing. No, they are not bound for marriage to love. Now Srila Gurudeva is explaining that rati, that means the sthayi bhav, permanent mood of relationship. This rati is divided into 5 types. But these 5 types have been divided into 2 categories. One category is called Sambandhanuga and one category is called Kamanuga. Now, those who are in Dasamud, Sakyamud, Vatsalyamud, this type of rati, if one is aspiring for this is called Sambandha Anuga. And those who have this, Sambandhatmaka. So, Sambandha means relationship. Each person who has this kind of mood has a particular relationship. And these particular relationships have their own maryada or etiquette of behavior. This rati, in these types of rati, the celebrity or the tendency to serve cannot transgress the maryada which is connected with that particular mood. Otherwise, it will be finished. For example, Madhya Yashoda, according to the etiquette of her relationship with Krishna, she can serve him in so many ways, but she cannot serve him by her whole body in the way that gopis do. Not possible. And therefore, her celebrity, her tendency to serve, is limited at some points by the maryada or the etiquette of the sambandha, the relationship that she has with Sri Krishna. So, what to speak of Madhya Yashoda, we see Nanda Maharaj, the Sakas, those in servants who like Chitrak and Patrak, they are even less able to expand their celebrity. So, the maryada within the different types of rati, it limits their sevavasana and their tendency to serve. But in Kantarati, there is no obstacle at all. It is not bound by any type of maryada. And because it is not impeded, therefore it is not limited. It is unlimited. Now question may come. So that Madhurya Rati is called, those who aspire for this are Kamanuga, and those who attain this, Kamatmaka. So, Krishna and the gopis, do they have a relationship or not? This question comes. Yes, they have a relationship. But in their relationship, there is the pradhanata or the predominance of
seva vasana, their service tendency, seva vritti. Their tendency to serve is predominant. And therefore, they fulfill every desire that Krishna has. Whatever desire comes in the heart of Krishna, gopis can fulfill it. But those in Dasa Sakya Vatsalya Bhav, they cannot fulfill every desire that may arise in the heart of Shri Krishna. So, in this Kanta Bhav, which transgresses all types of Maryada, the gopis feel that the importance of Veda Dharma, religious activities, Arya Path, public opinion, all of these things, they are as insignificant as a piece of dry straw. Everything is discarded for the sake of Krishna's happiness. So we see that Rukmini, Satyabhama, the queens of Dwarka, they have calm. They have this relationship as beloveds of Krishna. But gopis, their calm, their attraction to Krishna as his beloveds, and their seva vritti, their prem, are tadatmik. Srila Gurudeva made a very profound point, very deep point. Their calm and their seva vritti are tadatmik. They're completely one with each other. That means that they have no desire to receive any benefits from their relationship with Krishna. There's not even the slightest smell of any kind of self-interest or necessity to be reciprocated with in the love of the gopis. Therefore, Krishna is completely controlled by the love of the gopis, because their calm and their seva vritti are tadavik. They are completely one with each other, there is no difference. Whereas Rukmini, Satyabhama and the queens of Dwarka, their calm is somewhat independent from their seva vritti, and therefore, even though they are very attractive, they cannot control or attract the mind of Krishna. So, Srila Krishna's Kaviraj, he explained, Atmendriya pritivancha karivale kam, Krishnendriya priti icha dhari prem nam. The desire to give happiness to one's own senses is called kam. Here kam means material lust. But Krishnendriya priti icha dhari prem nam. The desire simply to satisfy the senses of Krishna is called prem. But this prem, it is actually the love of the gopis. The Kama of the gopis has become celebrated by the name, the prem of the gopis has become celebrated by the name Kama. So, the gopis think that somehow or other, by any means, we must give complete happiness to all the senses of Krishna. So then, I asked Srila Gurudeva, Rukmini and Satyabhama, they have come for Krishna, so are they in the category of Sambandatmika or Kamatmika? So Srila Gurudeva explains that they have a Sambandha, a relationship with Sri Krishna. They are married. And so, because their seva vritti is limited by the Maryada, which is in regard to the married relationship, therefore they can be called Sambandatmika, and only gopis are Kamatmika. Though they have a relationship with Krishna, it is based on love, it is not based on marriage, because gopis are not married to Shri Krishna. They are married to others. एक फिरदौस है, अमानगा भक्ति भी दो भागों में विभक्त है। अमानगा भक्ति दो भागों में विभक्त है। It is divided into two. Kamansa or Tat Bhava Ichhatrika. Yeah, what? Tat Bhava Ichhatrika. First what? Sambhog Ichhamai. That is Tamasika. नहीं, पहले वाला संभोग इच्छा हुई, ललिता विशाखा इत्यादि ये सब हैं, राधा जी की क्या सखियां हैं, ये लोग हैं संभोग इच्छामयी कामात्मिका। और रूप मंजरी और जितनी मंजरियां हैं मेरे तब तक इच्छा भावमयी।
सात्विका भाव, दोनों में कुछ पार्थक्य है। जीव की वो संभोग आत्मिका भक्ति में अधिकार नहीं, केवल मात्र तत्तर इच्छा भावात्मिका में नहीं अधिकार है, और जीवों के लिए ये सर्वोत्तम, यही महाप्रभु जी ने देखा है। Now Srila Gurudeva explained, Kamatmika Bhakti has two types. It's divided into two categories. One is called Sambhog Ichamai, and the other one is called Tattat Bhav Ichamai. Sambhog Ichamai means this love is composed of the desire for Sambhog, loving pastimes directly with Sri Krishna as his beloveds. Sambhog Ichamai, the jiva who has emanated from Tatastha Shakti, he has no adhikar, no qualification to attain this mood. The other mood is called Tattat Bhav Ichamai. It means this Kamatmika Bhakti, which is composed of the desire to relish the sweetness of the moods of one heroine who is situated in Sambhog Ichamai. For example, the Manjaris, Rupa Manjari and others, they want to relish the sweetness of Radhika's mood when she meets with Krishna. So the living entity, the jiva, he has adhikar for this, not for the Sambhog Ichamai, in which the heroines are Swatantra, they're independent. Janava, you should come and do any kirtan, Lord kirtan. That I died. Come near. Raya Ramananda जी ने कांता भाव के लिए दोष को उतारने के लिए पहला श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 47 अध्याय नायं योम हु नितांतरते प्रसाद सज्जोषिता नवीन बंध रुचां कुतो अन्य रासोत्सवे अस्य उजदंड गृहीत कंठ लब्धासी संजो मुदा नायं सियो मुक्तांतरते। वृंदावन में रासोत्सव में कृष्ण ने गोपियों के रास के समय में अपने हाथों से उनके गले में हाथ डाल दिया। ये गोपियां कहीं चली न पिछड़ने से, इस डर से स्वयं लोगों के गले में हाथ डालकर एक एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण बनकर नित्य का आस्वादन किया। ऐसा सज्जोषितांग नलिन गंध रुचांग तो अन्ना नायन सियो, अपने बामन पर विराजित लक्ष्मी जी के लिए यह संभव पर नहीं हुआ। ऐसा प्रसाद नहीं किया तो चरण सेवा में ही करती है। उनके गले में हाथ डालकर नृत्य किया हो और कहीं तुम चली न जाओ तो मैं कैसे प्राण धारण करूंगा, ये भावना नहीं है। किंतु गोपियों के लिए कृष्ण की
ब्रजरमणियों के लिए इतनी कृपा है कि अपने हाथों से गले में डाल करके नलिन गंध, जब लक्ष्मी जी की ऐसी, लक्ष्मी के प्रति ही ऐसी नहीं जगी कृपा है, तो स्वर्ग में रहने वाली जो वामन देव इत्यादि की जो शक्तियां हैं, नलिन गंधा या पद्म गंधा, उनके शरीर से पद्म की गंध, कमल की गंध आती है। उन लोगों की तो बात ही क्या, और सब संसार की और स्त्रियों की तो बात ही क्या। इसलिए गोपियों के ऊपर में, ब्रजरमणियों के ऊपर में उनकी विशेष कृपा है, ऐसा कहीं नहीं देखा जाता। तासाम आविर्भूत सौरी, इसका हमने वर्णन किया। तासाम आविर्भूत सौरी, कब की बात? तासाम आविर्भूत सौरी, जब कृष्ण पूर्णिमा के दिन बंसी बजाई और सब गोपियां अलक्षित रूप में उनके पास में उपस्थित हो गई और कृष्ण ने ठठोली करते हुए उन्हें घर लौट जाने के लिए कहा, पतियों की सेवा के लिए कहा। तो वो उसका उत्तर दिया, पहले गुरु की सेवा, तब इसके बाद में पति की सेवा। और कृष्ण इसका उत्तर न दे सके, रास आरंभ हुआ। उसमें प्रत्येक गोपियों के साथ में कृष्ण नृत्य करने लगे, राधा जी के साथ भी। राधा जी को मान हो गया और उनको अपना सौभाग्य का मत, सौभाग्य का मत माने वो देख रही कि कृष्ण हमारे साथ ही नृत्य कर रहे हैं और किसी को नहीं, इसलिए उनको मन हो गया, अभिमान हो गया। और राधिका को देखा कि उनके साथ ही हमारे साथ भी, इसलिए उनको मान हो गया। इसलिए राधिका जी का मान साधन करने के लिए और उनका मान, उनका सौभाग्य मद चूर्ण करने के लिए कृष्ण राष्ट्र अंतर है। तब गोपियां जमुना पुरी में आकर के विलाप करने लगे, वो भी सुस्वर से विलाप करते। तो उस समय में कृष्ण उनके विलाप को सह करके रह नहीं सके, उसी भूमि में वो प्रकट हो गए। कैसे? तासाम आविर्भूत सौरी, सौरी माने वसुदेव, सूर्य के वंशज। यादव लोग बड़े बड़े कठोर स्वभाव के होते हैं। ये कठोर क्यों कहा? रात में इनको सब कुछ छोड़ करके इनके लिए आए और उनको छोड़ करके ये अंतर ध्यान हो गए, इसलिए वो कठोर है। इसलिए वो समझ रहे कि हमको ये कठोर समझती होंगी, इसलिए थोड़े से लज्जित हुए, गले में पीताम्बर को डाले हुए, जैसे दांतों तले तीर्ण धारण करते हैं वैसे धारण करते हुए पीताम्बर धारण सर्व साक्षात मन मत, साक्षात मन मत। ये किस लिए श्लोक दिया? इसका ये तात्पर्य है, गोपियों का अतिरिक्त कहीं ऐसा मनमत स्वरूप, इसलिए गोपियों की, ब्रजरमणियों की रति में, प्रेम में सबसे सर्वोत्कृष्ट। और भी एक श्लोक दिया, यथोत्तरम असौ स्वाद विशेष उल्लासमय भी रति वासनाया स्वाति भाषते क्वापि क्वचित्। उल्लासमय रति, उपयोग की उल्लासमय रति, उत्तरोत्तर स्वाद विशेष, उसमें अधिक से और अधिक, उसे भी अधिक, उसे अधिक वो बढ़ती जाती है। वो कभी भी थमती नहीं, वो उनकी सेवा बढ़ते आ जाती है और कृष्ण का आस्वादन बढ़ता जाता है।
और दोनों में बुढ़ा-बुढ़ी लग जाता है। सभा के सारों को प्रसन्न करने के और कृष्ण उतने ही प्रसन्न होते जाते, दोनों बढ़ते जाते। एक फल विशेष है, वासना क्रम है, परम आस्वादन विशेष तो या मधुर रस रूप ये परिणत होता है, वही उल्लास में रहते। ये मधुर रस आना कृष्णदास का प्रयास करते हैं। अतएव मधुर रस को ही तारना स्वकीय पारकिया रूपे विविध संस्थान पारकिया भावे अति रसेर उल्लास ब्रज विनायिका नत्र निवास ब्रजबधु बने एक भाव निरवधि तार मध्य राधा भाव अवधि प्रौढ़ निर्मल भाव प्रेम स्वरूप माधुर जरस आस्वाद अतएव से ही भाव अंगीकार करी साधले नदी के बंशा। इसलिए उल्लास में रति गोपियों की है, इसलिए गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति सर्वोत्तम, यही राय रामानंद जी बतला रहे। और भी नारायण हम निरोबद्ध संविजा का है, इसका हम कल और विशेष व्याख्या करेंगे। आज यही तक हम लोगों का प्रवचन समाप्त होता है। कल का प्रोग्राम क्या है? सिर्फ तुम्हारा नहीं है, कल तो विश्राम यहीं पर रहेगा, हरी कथा होगी और महाराज इत्यादि हरी कथा कहेंगे। रसानंद प्रेमानंद में मिल गया, दोनों आनंद है, दोनों शायु की मुक्ति लाभ की है। Hare Krishna. Some devotee has requested for initiation. So tomorrow will be initiation about 9:30 a.m. The devotee who desire mission, they will go only there, not all other devotees. Because where we are hosting, the liquid outside, too many people are coming. And today, one devotee when he entered, and dog was barking, still he entered the bathroom to the dog catched him. But fortunately, he get it from dog bite. So they are requesting only who is most essential, they will come, not to so many people. So I am requesting you all, who will take initiation, they will come, not to all others over there. And tomorrow, day after tomorrow will be fire sacrifice led by Srila Tirtha Maharaj. Hare Krishna. One more thing, that today one devotee got injured during taking part in ocean. So nowadays ocean is too much dangerous, and requesting especially the young kids, a teenager, they must be very careful to take part in the ocean. No need to show that how brave you are in the ocean. So now, see Raya Ramananda, he is giving evidence from Shastra to illustrate the superiority of Madhurya Rasa. First verse from 10th Canto Srimad Bhagavatam, chapter 46, spoken by Sri Uddhava, after he became a witness of the glories of Gopi's praying. He said, Nayam Shri Anga Unatantarate Prasada Swayoshitamna Gaganda Kutanya Rasotsavasha Bujadanta Ginitakanta Labdashishamya Udigat Prajasundarinam. In this verse, he said, at the time of the Ras Utsav, the festival of Ras, Shri Krishna, he kept his arms around the necks of the gopis of Vrindavan. Specifically, there were millions of gopis, and Krishna expanded himself
and individually, embracing them around their necks, he danced with them. So, Uddhavji is saying, this type of mercy was not given to others. It's not possible for them. For example, Lakshmi Devi, she serves the lotus feet of Sri Narayan. Bhagavan will not put his arms around her neck and dance with her. This is not possible. So if such mercy was never even given to Lakshmi Devi, then what to speak of other heroines, such as the ladies of the heavenly planets, who are so beautiful that their natural bodily fragrance resembles the fragrance of lotus flowers. Therefore, Krishna has given a special mercy only to the gopis. Then Ramananda gave another verse, Tasamagar Butshori Svayamana Mukhamuja Pitum Bharadhara Sragri Sashat Manmata. Srila Gurudeva had explained this verse early in the lecture, but he gave more explanation now. On the full moon night in the Sharad season, Krishna went to Bamsivat and played upon his flute. And at that time, giving up the service of their husbands, the gopis left everything and ran to meet with Krishna, unknown to each other. Alakshit means they thought that they were going alone and others were not going. And they thought they were not seen by anyone else. But when they arrived there were so many of them. When they arrived, then Krishna told them, you should return to your homes and serve your husbands. And in this way, there are many cunning words spoken by Shri Krishna and more cunning words spoken by the gopis who cut all these arguments. They said, oh, you are giving us very good instructions, so you must be our guru. And according to Shastra, one should serve guru first and serve husband afterwards. So we'll stay here. Then Krishna was laughing, he was very happy, and Ras Leela began. But when Ras Leela began, after some time, Krishna disappeared. So Sri Gurudeva Swami Pad gives two reasons. One reason was to subdue the man, and the other reason was to subdue Saubhagya man. Man means salty food, and Saubhagya man means the pride that comes in one's being absorbed or intoxicated by one's own good fortune. So specifically, each gopi thought, oh, Krishna's only dancing with me, so that we can intoxicate by their own good fortune. So, in order to subdue this, Krishna disappeared from Rasa. And Radhika, seeing that she was being treated equally with other gopis of Vrindavan, Asoki became man, and she left Rasa. So Krishna disappeared in order to pacify her mind. So, finally, Krishna disappeared completely from all gopis, and they assembled on the bank of Jamuna, and they were lamenting in a very pathetic mood. When Krishna saw the heights of their separation, he again appeared in their assembly. And that moment has been described by this verse spoken by Sri Gurudeva Goswami. Tasam aviravut shori. Just then, among those gopis, Krishna appeared. Here Sri Gurudeva Goswami, out of sympathy for the gopis, is calling Krishna by the name Shori. Shori means who appeared in the dynasty of Surasen. So, Surasen is in the Kshatriya dynasty. So why did Sri Gurudeva Goswami say that Krishna is related with the Kshatriyas? Because the warrior caste, they're not soft like the goat caste. They can be very harsh and cruel. So out of sympathy for the gopis, Sri Gurudeva Goswami was thinking, Krishna had been so cruel to leave them. They had left everything for him and then he left them. So this is great cruelty. So out of sympathy, Sri Gurudeva Goswami said, Tasam aviravut shori. Oh, how could Krishna be so cruel as to leave the gopis? And now he's reappeared before them, holding his pitambar, with a garland of flowers, in a very, very humble mood, and slightly smiling. At that time, he has Sakshat Manvataru, the Cupid of Cupids, who churns the hearts and minds of everyone. That is Kamdev. This form is so attractive, Krishna can churn the mind of millions of Kamdevs. So, this
form of Krishna, this unparalleled, unprecedented beauty of Krishna is only displayed in the ascended gopis, nowhere else. So their frame is the highest. Then Sri Raya Ramananda uttered a verse which later was included by Sri Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu. Yathotarama Sausabhi Visheshula Samayapi. It means that even though there is happiness in all the types of rati, the same type of happiness is not present in every rati. Yathotaram Asosodvi. There is more joy, more happiness in each type of rati successively one above the other. Sakyadasa and Madhurya is highest. So this Madhurya Ras is called Ulasamai, because it gives the most happiness to Krishna. And when Krishna is most happy, then the devotee, they feel the most happiness. And therefore, this Ulasamai Rati, or Madhurya Rati of Gopis of Vrindavan, this is superior to all. To all the people who were